Okay, so if you want to do some analysis on the basis of traditional steps, which we not traditional, I would say that's not been traditional thing, because right now also we are doing the same kind of steps in each and every project. This is for PyCaret we have seen first time. Okay, no worries. So when I'm going to print the head, that is the first 5 rows, and the last 5 rows with the tail of my data set, then I'm going to print its shape and the columns, and I need to find the duplicated values which are present in my data set. Okay, and then if I because there is one duplicated values, it doesn't matter whether you're going to drop it or not drop it, because one duplicate value doesn't make any sense. Okay, but still I did dropped, fine. Then I found that is there any null values present in my data set or not, so I did the same. Okay, to find the null values. Then df dot info information. Okay, just check the information, how many integer, how many float values, and object data type has been present in my data set. So this is what I printed with the help of the information. Then description for the numerical values, the statistical information of my data for the numerical values, this is also been printed with the help of df.describe. So these are certainly the basic steps which I usually follow in my making any kind of projects. Okay, so however, but this all the steps has been done by PyCaret internally. It perform all cleaning and analysis from itself only. Okay, but I haven't here I did clean. Okay, drop the duplicates. If I did found any null values, or I could have replaced with the mean mode or whatsoever, I would have done. Okay, but no requirement, because it's nothing null bin value available here. Okay, so now then I try to find what are the unique values which are present in my data set. Okay, so I'm available with the gender, I'm having two unique values, male female, and then in the children, six. So there could be like 0 1 2 3 4 5. Okay, so six unique values are present in the children. Okay, then two in the smoker, four in the region, and charges is obviously. Okay, so we can decide, okay, this is gender is a category, okay, smoker is a category, region can also be, okay, four types of values are there, so we can have consider them. Okay, this is also a category part. Okay, children's and having six values. In case of the Python, when I'm going to implement, though it is a numerical value, yes, it is a numerical value, I can't say it's a category in a general, in general terms, but when I going to use in a Python code, okay, though, so I can draw the count plots related to the children, how many are zero, having zero children, how many are having one children, two children, three children, four children, five children, how many are them. So I can build the same kind of plots which I'm going to build for the gender, for the smoker, for the for the regions. I can draw the same plots for the children's also. Okay, so if you are available with a less values, 2 3 4 and something like that, I can draw the count plots related to it. And I want to show you one more important thing. I need to show you one more important thing जो कि मुझे आपको सिखाना है. Have you heard about pandas profiling? Did anybody knows about pandas profiling? No. Okay, fine. So that is why we are here for this project. We did learn about the PyCaret. I hope that makes a sense for you all guys. And now the next thing is pandas profiling. See, अब जैसे आपको कोई report, if you need to generate a report, or you need to look for the analysis of all your parameters, features which are available in your data set. Okay, again you want to have an idea कि यार मुझे कौन कौन से what kind of plots I need to draw, what could be analysis can be done, मुझे क्या करना चाहिए था. So there is a very good library that is called as pandas profiling. Okay, so you can give your data frame into pandas underscore profiling dot profile report. It will create the complete report of your data. Okay, how I did create it, the complete report, and here you can see, and it will be like a web page. ओके, अभी यहाँ केगल पर ऐसा इट्स बिन लुकिंग लाइक दैट, लेकिन जब आप करोगे ना, व्हेन यू आर गोइंग टू डू ऑन योर जुपिटर पे करेंगे, तो ये सेव कर देगा वेब पेज के फॉर्मेट में, जिसको आप फिर आगे यू कैन हैव अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड यू कैन यूज इट इन योर प्रोजेक्ट्स. तो क्या होता है, आई हैव क्रिएटेड द कंप्लीट रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट में बता रहा है, देखिए पूरे इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना बोला, ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, मिसिंग सेल्स. अभी ये तो मैंने ऊपर एक एक method I did applied one method, and did I found कि how many are duplicate, how many are null value. So अभी यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पूरा प्रोफाइल बना के बता रहा है कि these are things. न्यूमेरिकल ये बोल रहा है 5 है, कैटेगरिकल 2, बूलियन वैल्यू 1. ओके, ये बता रहा है. अच्छा, ये क्यों इतने ज्यादा बता रहा है? द रीजन इज कि मैं ऑलरेडी ऊपर वो कर चुका हूँ, आई यूज पाई कैरेट, उसके कारण वेरिएबल्स का नंबर वगैरह ये बढ़ गया होगा.
ओके यदि मैं नहीं करता इनिशियली ही, इफ आई डू डिड परफॉर्म द प्रोफाइलिंग, तो ये थोड़े से चेंजेस नहीं बताता जो इनिशियल जो भी थे। ओके तो ठीक है, ये आप जब करेंगे तो कोशिश ये करिएगा ये ऊपर कर दीजिएगा, बाद में इस ये जो प्रोजेक्ट है इसको रिवर्स करिएगा आप। कैसे? यू डू अप्लाई ऑल द मशीन लर्निंग स्टेप्स फर्स्ट एंड देन एट द लास्ट यू अप्लाई योर पाइकैरेट, ऐसा करना आप। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्यों, क्योंकि मैं पाइकैरेट से पहले नीड टू फाइंड कि कौन सा वाला मॉडल अच्छा था, तो वो मैं अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर डायरेक्टली, जरूरत नहीं। प्रोफाइलिंग, सो प्रोफाइलिंग इट विल गोइंग टू समराइज यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके ये करा, फिर उसने बोला वेरिएबल्स के बारे में बताया, तो वेरिएबल्स में दी इंडेक्स की बात करा, ओके दिस मच इंडेक्स वैल्यूज ए मिनिमम मैक्सिमम, पूरी इंफॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरी पैरामीटर विच इज अवेलेबल इन योर डेटा सेट पूरा बताएगा ये। ठीक है, देन इट्स गोइंग टू टेल अबाउट द एज, एज वाला पैरामीटर उसमें क्या क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज, नेगेटिव एंड मिसिंग वैल्यूज एंड ऑल दिस थिंग्स, वो पूरा बताएगा, इट गोइंग टू टेल यू। देन जेंडर के बारे में इट्स ओके, इट इज कैटेगरिकल, तो यहाँ से पता चल जाता है कैटेगरिकल है, एज रियल नंबर्स हैं, ओके इंडेक्स रियल नंबर्स हैं, ओके तो बताएगा, इट्स गोइंग टू टेल यू ओके क्या टाइप है उसका और किस तरीके से। ये भी बता रहा है, देखिए मुझे काउंट करने की जरूरत, आई डू नॉट हैव टू डू द काउंटिंग, इट शोइंग दैट ओके इट इज हैविंग टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, मेल 675 फीमेल 662, खुद ही बता दिया उसने, मैंने कहीं से कुछ नहीं निकाला, आई हैवंट डन एनीथिंग, it automatically telling you okay these much are the male and these much are the female values available in your data set। ओके एवरीथिंग नाउ, बीएमआई फाइन। अब अच्छा ये भी बता रहा है क्या बनेगा, ये देखो बीएमआई है ना, हिस्टोग्राम बना के बता रहा है ये, फॉर द बॉडी मास इंडेक्स द काइंड ऑफ वैल्यूज व्हिच यू आर अवेलेबल, तो ये बताया कि अब आपको यहाँ से आइडिया लग गया कि अगली बार मैं बीएमआई में हिस्टोग्राम बना दूंगा। हियर यू गॉट एन आइडिया कि व्हाट इज द फीचर और उस फीचर के साथ में क्या कर सकता हूँ, ये भी बता रहा है यहाँ पे। ओके तो कितनी मिनिमम कितनी मैक्सिमम वैल्यूज है, जीरोस तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके कितनी मेमोरी ले रहा है वो। ओके मीन कितने, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ इट एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट कैन बी ड्रॉन फॉर दैट। ओके हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पर बार प्लॉट बन सकता है चिल्ड्रंस के लिए, इट्स काइंड ऑफ हिस्टोग्राम ओनली। ठीक है ये चिल्ड्रंस के लिए भी बन रहा है, ये रियल वैल्यूज है। ओके तो ये इस तरीके से जीरो, अब ये जीरो बोल रहा है चिल्ड्रन में जीरोस आर 573 वैल्यूज। ओके 0% 42.9, और जीरो चिल्ड्रन थे, नल नहीं है, दे आर नॉट कंसिडर्ड नल, जीरोस वैल्यूज आर 573 ये बोल रहा है। ओके तो जीरो मिनिमम मैक्सिमम 5, ये इस तरीके से यहाँ पर भी बन सकता है। ओके इट्स एंड दिस विल बी जस्ट लाइक अ काउंट प्लॉट, तो ये जो प्लॉट बना के बता रहा है ना यहाँ पर, मैं इसको काउंट प्लॉट से बना दूंगा। ओके तो हर एक पैरामीटर का ये बता रहा है कि क्या कर सकते हो तुम। तो when you are going to prepare a machine learning project, if you applied this thing profiling, so बहुत कुछ आपके लिए सामने एक पिक्चर विल गोना क्लियर। तो ऊपर वाली स्टेप्स से PyCaret से आई डिड क्लियर्ड दैट which model has been better suited for your data set, और यहाँ से when you ask to me sir मुझे I need to prepare the complete ML project, तो मुझे क्या what should I need to do, तो यहाँ पर ये भी बता दिया एक एक वेरिएबल के साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है तो आप जब ऐसे बढ़ जाओगे ना आगे, अपने आप प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा एज, ओके एज का भी बना के बता दिया, अगेन इट्स हिस्टोग्राम बन जाएगा, एज के साथ हिस्टोग्राम भी बनता है, ये बना के बता दिया वैल्यूज हैं। ओके ओके जेंडर के साथ इट्स क्लियर एंड बीएमआई एंड चिल्ड्रंस के साथ है, स्मोकर के साथ ओके कैटेगरिकल वैल्यू है फॉल्स 1063 टू 274। यस एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। अच्छा इंपोर्ट डिटेल, ओके व्हाट इज दिस डिटेल प्रवीण, detail dot show Uh, here, yeah। this detail is, am I audible? Yes yes audible। Yeah, this detail is one another library which we can use to do all this EDA. Mm-hmm. Whatever you just showed pandas profiling, just Mm-hmm. like that, it Mm-hmm. gives more options. For histogram, you can have the PDF plots Okay and you can have the box and whisker plot. All of that it will automatically do okay okay very good। for each column. Okay Yes. so all the I think it's a request from all the viewers, okay whatever the suggestions are coming you can please notify that, okay we can perform this analysis also from our side। Okay so here I'm use pandas profiling, so this is all the details have been available to me। Okay so here if I do talk about the interactions, if I do talk about the interaction, so what is the interaction between each and every variable available in your data set, तो ये भी interactions करके बता रहा है। Okay with the index and age and all these stuff, सब पूरा interaction, interaction of
Interaction of, for example, I do take index and the charges. Index and the charges is going to show you the interactions, how they are having the values. Okay, I can take age and the charges, I can take BMI and the charges, I can take children and the charges and the charges. So you can print the complete report. You can print the complete report. Correlation, what is the correlation between the variables? Okay, so here also showing the correlation heat map for you. Okay, and different type of correlations, Spearmans, Pearsons, Kendalls, and whatever be the correlation, you can show here the correlation metrics, heat map. Okay, any missing values are there? I guess there are no missing values in your data set. So here is the count for the missing values, nothing has been there. Okay, it's showing the metrics. Okay, there are no missing values in there in your data set. Okay, so the here are here is your first 5 rows, here are the last 5 rows, 5 or 10 whatsoever it has been taken. Okay, and yeah, this is your pandas profiling. This report is generated by pandas profile, and we got one suggestion. Okay, that we can use detail.showdf. Okay, this is also we can use. Okay, if I haven't installed detail, because I think I need to install detail, isn't it, Praveen? We need to install it separately. Yes, yes, yes. Okay, so I Just haven't like how we installed. did Yeah, yeah. PyCaret. Okay, Yeah. so as we did PyCaret, we need to install the detail also, and then we are going to use it ahead. All right. Now the next case is I can perform the visualization from my side. I can take Matplotlib, Seaborn. Okay, that is a basic data visualization libraries. Then I can draw the count plots for the gender. Okay, that means first I'm going to find what is the unique value which is present in the gender. Then what are the value counts for the gender? Okay, how many males, how many females are there, and then draw a simple count plot for it. Okay, count plot for it. Fine. Then similarly I can draw the count plot for the children's also. Okay, because it is having 5 values, 0 to 4, 0, 1, 3, 2, 5, and 4. Okay, so how many values are there? 6 basically. So I can draw the count plot for it also. Okay, here it is the count plot which has been shown in the pandas profiling also. I got an idea, so I can draw the count plot for the children thing also. Okay, similarly I can draw the count plot for the smoker also. Okay, I did found its unique, how many unique values are there in the smoker, how many value counts for each and every category, that is how many no, how many yes are there, and I did created the count plot for it. Okay, now for region also, there are 4 regions available in my data set. I can prepare the count plot for this thing also. Here you can see. So this is what you do in your machine learning project. This is how you follow. Okay, and then for I can take age also, I can prepare the histogram. I can take any other values, I can prepare the histogram. There are few other plots also. So the question asked by madam sir, what is when you are using this PyCaret sir, अभी हम तो फिर ये analysis कैसे हम show कर पाएंगे? So हम separately we can do the code and we can give the analysis, we can perform the analysis. Okay, this is what we can do. All right. So these are certain plots I did performed over it. Then this is how I found the correlation. df.corr, that is what is the correlation between the variables. Okay, and okay, I think correlation. Okay, then sns.heatmap. Okay, correlation can't be an expression. I guess this require a comma. Okay, so this is the correlation. We have already shown the correlation between the variables in pandas profiling. वहां पर हम ऑलरेडी बता चुके थे, और अलग अलग कोरिलेशन हम बता चुके थे वेरिएबल्स के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से कोरिलेशन बता दिया था. यहाँ फ्रॉम माई एंड मतलब अलग से ये आप अपना when you are going to do the code of, you give the correlation between the variables. इस तरीके से you are going to find the correlation, and this is how you are going to produce a heat map for it. Okay, then the some important terms, because now at this particular stage I need something something from you side, your side. Okay, okay, now please kindly, I'm going to have the dummy values for the gender, children, smoker, and the region. Is that, is this is fine, or I, or I should have taken
label encoder for the gender and the smoker, and for children and region I should be going ahead with the dummies because I need to perform one hot encoding. Please, what should be done? What should be done here? Sir, I think we should do hot encoding For all? for where we have this category value. Okay, for category values we are having at the gender, okay, and at the smoker. These two are having two value. We can use in a label encoding 0 1 for that, for them, these two. Yeah, And for also region, sir, because region, it has text value, right? Right. We need all our data should be in numeric value when we are performing the model, right? it's a text value. We need to see, that's what I'm saying. But it has having 4 text values region. Mm. तो 4 को मैं 0 1 2 आई कांट डू, वहां पर लेबल एनकोडिंग नहीं लगेगा, 0 1 2 3 नहीं कर सकता मैं, आई शुडंट डू दिस थिंग. तो रीजन के लिए भी उसने पाइकैरेट ने भी पाइकैरेट आल्सो डिड वन हॉट एनकोडिंग वहां पर उसने लगाई Oh, है. व्हाट oh, अबाउट द चिल्ड्रन थिंग? चिल्ड्रन के साथ कुछ नहीं करना, चिल्ड्रन इज ऑलरेडी न्यूमेरिक ना, तो इसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, तो द थिंग इज आई नीड टू ओनली लुक आउट फॉर द डमीज फॉर द रीजन. I need to only look out for the dummies for the region. Am I right or not? you're right. Correct. And I need to perform label encoding for. I need to perform label encoding for whom? Label encoding for your gender and Region. gender and your, Region. yeah. Age. No, एज के साथ तो एज तो हो ही नहीं सकता. मुझे तो लेबल एनकोडिंग आई नीड टू गिव ओनली 2 वैल्यू 0 and 1 देना है बस मुझे. तो वो तो मैं स्मोक के साथ, ओके, ओनली विद द स्मोक, Smoke. only with Okay. the smoke and only with the your this thing, Gender. okay. Gender. Yes, gender. So I'm going to import the label encoding, so let me import the label encoding also. Okay, so I'm just going to take from sklearn import pre-processing what I need to take, as I did import one hot encoding. I guess I did this thing, one hot encoding. Yeah, I guess import pre-processing से अब मुझे label encoder वैसे ही मिल जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है. Okay, I will get this value only directly I can get. Okay, so I'm just going to put it here, okay, with the pre-processing label encoder, and I'm going to perform the label encoding for my what values, your df. You are going to take the label encoder for smoker, okay, and this should be equal to what you are going to take pre-processing. You're going to take I think label encoder is okay. So label encoder, label underscore encoder dot fit underscore transform. Okay, so label underscore encoder dot fit underscore transform. Okay, and this I'm going to take, okay, wait, df, and I'm going to take this thing, smoker. Okay, smoker, and then the same thing I'm going to copy it. Okay, control C, I'm going to copy it and I'm going to paste it here. And this same thing I'm going to work with with whom? Gender. 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 Okay, fine. ओके, तो ये दो वैल्यू 0 1 वाली थी, तो दोनों को मैं इनमें कन्वर्ट कर दूंगा. आई गेस दिस विल वर्क. ठीक है ना, अब ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया. अब ये जो बचा रीजन, इसको भी मुझे 0 1, आई नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू 0 1. इसको भी न्यूमेरिक्स में करना था मुझे. ओके, तो ये उसमें कन्वर्ट हो गया. आई एम गोइंग टू गेट द डमीज फॉर इट. ये भी आई एम गोइंग टू डू. ओके, तो गेट द डमीज. अब ओके, डीएफ, लेट मी टेक, ठीक ही था वो, डीएफ अंडरस्कोर न्यू इक्वल टू पीडी डॉट गेट डमीज. तो ये अभी डीएफ के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पीडी अंडरस्कोर न्यू डमीज, एंड देन आई एम गोइंग टू, ओके, पहले कर देते हैं, देन आई एम गोइंग टू शो यू. ओके, ये रहा. ओके, आई गेस इट्स डन. एंड देन df अंडरस्कोर न्यू, ओके, डॉट हेड. लेट मी शो यू द फर्स्ट 5 रोज. ओके, तो ये रहा. तो ये जो पाइकैरेट ने करा था ना, द टास्क विच हैज बीन डन बाय द पाइकैरेट, वो अब आपने खुद कर रहे हो मैनुअली. मतलब पाइकैरेट सी द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी की खुद से कर लिया उसने.
सेल्फ एनालिसिस डन बाय द PyCaret कि यार ये जो था, मुझे इसको बाकी को लेबल एनकोड कर दूंगा और एक को वन हॉट एनकोडिंग कर दूंगा। गेट डमीज का मतलब ये होता है, देखो ये हो गया, ये गेट डमीज है, दीज आर द डमी वैल्यूज, ये उसने कर दिया, लेकिन आपने यहां मैनुअली करा। ओके, एंड देन आफ्टर दैट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके आई एम गोइंग टू टेक द मॉडल सिलेक्शन, देन फिर आई एम गोइंग टू ड्रॉप द चार्जेस फ्रॉम द एक्स, ये आपका मतलब यहाँ आई एम गोइंग टू ड्रॉप द चार्जेस एंड रिमेनिंग ऑल आई एम गोइंग टू टेक एज इट इज। so I'm going to drop the charges and on y axis I'm going to take the charges। तो x से charges को drop करा एंड और charges को y पे उठा के ले गया। then क्या करा, then train test split करा, मैंने अपने डेटा को 25 टेस्टिंग, 25% is my test size and 75% is my training size, वो परफॉर्म करा। एंड देन अच्छा, अभी एक चीज है, स्केलिंग। व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड स्केलर, ये लेना पड़ेगा? क्यों लेना पड़ेगा? व्हाट कुड बी द रीजन? आई नीड टू स्केल माय डेटा। Yes, because age is in 2 digits and BMI is in different units, या and it yes, can range up to 100 plus. yes, because the data set which we are available with, the features are having different units, so it is mandatory for us to scale them so that they could be represent in a plane. Okay, once we are going to scale, once we are going to normalize our data, then we are able to see our data in a one plane. Okay, so scaling has been very much required. Okay, so that is why I took the standard scaler. Then let me take the object of the standard scaler and I'm going to scale my x train and the x test. Okay, this is how I scaled my data. Okay, so my x train and x test is now scaled value. Let, if I go into show its shape, okay, this is the shape of x train, y train, x test, okay, and the y test, this is the shape. Now, as you already found, sir, gradient boosting regressor was best. अब ये तो आपने already निकाल दिया था। Okay, this you already found, but the problem is कि जो मेरी problem थी, my problem was what? My problem कि यदि मैं उसको PyCaret जब initially I'm going to install, तो that was not been supported, on my Jupyter notebook। तो अब ये जो model, the model which I am going to prepare here initially, इसमें PyCaret नहीं लगा, इसमें PyCaret नहीं है, ये तो मैंने sklearn से import करा है। This doesn't require PyCaret, लेकिन with the help of PyCaret I know that okay, this one was a good one। तो इसमें नहीं लगा, तो I did gradient boosting regressor from sklearn। इसको मैंने मॉडल मतलब आई डिड क्रिएटेड माय मॉडल। ओके, REG क्रिएट करा मैंने, आई फिट माय डेटा इनटू माय मॉडल, दैट मींस अब यहाँ पर मेरा ट्रेन हो गया। और इफ आई नीड टू परफॉर्म द प्रिडिक्शन यूजिंग REG, ओके, ये जो मॉडल करा है, आई नीड टू परफॉर्म द प्रिडिक्शन, यू कैन सी x टेस्ट 1 2, इस पर मैंने आई डिड पुट वन वैल्यू। अब देखिए ये इसने प्रिडिक्शन कर दिया, इट परफॉर्म द प्रिडिक्शन। ओके, और यदि आपको एक्स टेस्ट की वैल्यू प्रिंट करनी थी और चेक करना चाहते हैं आप, इफ आई नीड टू प्रिंट, लेट अस प्रिंट एक्स टेस्ट कि क्या था और क्या इसने प्रिडिक्ट करके दिया है आपको। ओके, सो लेट मी हैव x अंडरस्कोर टेस्ट 1:2, ये रहा, ये क्या है x टेस्ट 1:2, व्हाट इज इट प्रिंटेड, और ये प्रिडिक्शन तो ये दे रहा है। व्हाट डज दिस मीन? For those feature values, हाँ, ये that फीचर is the वैल्यूज, prediction that we हाँ are getting. हाँ, ये फीचर वैल्यूज जो स्केल होने के बाद आई हैं। ओके, दीज आर द ये फीचर, ये तो प्रिडिक्शन है। ओके, आई कैन टेक इट एज, इसको एक काम करता हूँ मैं। ओके, चलो ठीक है, सिंपल था ना, कोई जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। लेट मी टेक y अंडरस्कोर प्रिडिक्ट इक्वल टू REG डॉट predict, can I take here x underscore test? Okay, so y prediction, let me find the y prediction values। okay, तो ये आ गया। अब ठीक है, you got the y prediction values also, all right। तो ये आपका prediction आपने निकाल लिया। this is a simple gradient boosting regressor model which you have trained from your side, your end, and you have performed the sample prediction। okay, ये this is the task which you need to do now। I am going to save my model, now I'm going to save my gradient। previously also I did saved my model, but with the help of my PyCaret। okay, now I can save my model with the help of pickle। so I'm going to import my pickle library, okay, and then I'm going to create a dump file।
okay, of my model. Reg, I'm going to give it as a name insurance underscore charges dot p. This is what I'm going to give. Okay, so I hope if you know about the pickle thing, that is, pickle is a library which is used for serializing and deserializing of the data, and this is actually a dump file in which the information has been stored in somehow what some bytes and some format which has not been simply readable. Okay, which has not been simply readable either. I can just take it as like a notepad thing or word file or something like that. It's a dump file created by the pickle library. Okay, which has which has information about your trained model. Okay, as we did save your model previously also with your PyCaret. Similarly, with now your model is simply saved without PyCaret. Okay, fine. So I guess if you want to see that, sir, where is my model saved, so you can check it here. Here, check it here. Insurance underscore charges dot p. This is your model, and you can download your model. Okay, now you can go to the download and download your model. Now it will be saved on your local drive. This train model will be available in your local drive. Okay, so if I'm going to click on download, okay, I got this thing in my local drive. All right. So now the next thing is I did just simply printed how many columns are there available in df underscore new, because if you want to create a Streamlit application, okay, so you should be knowing that how many columns should be required for the purpose. Okay, because I need to give the values of all these, then only we can have a prediction, then only we can perform the predictions. Okay, so we have downloaded our data. Okay, that means our model to perform the prediction. Okay, and fine, let me rename it to insurance. Okay, and I'm going, because this is this model which I have downloaded, I'm going to put it into my on local host. Okay, I'm going to do this on a local host. Okay, so let me We are, take, yeah. we are not able to see actually. Probably Yeah, I know share that. it. I'm just doing some simple. I just because I'm just saying that I'm going to the download. See, the model which I have downloaded, it's now came into downloads. Okay, I'm just copying it and pasting it into my folder, initial folder from where I'm going to run my Jupyter notebook. That is my Python folder. Okay, just a simple, just copy and paste. I'm doing nothing else. Okay, so my model which I downloaded, that came into downloads, and now I copied that particular model. Okay, and now and paste it into my Python folder. That's the only thing which I did. Nothing else I did. And I changed its name as insurance.p. That is the name I did. Now, let me share you. The next task is to Streamlit deployment. Okay, so let me reshare my screen, and we are going to create a code for the deployment. Sir, Yeah. can I ask? Sir, we scale all the features Uh-huh. which is independent features, right? Uh-huh. And we don't scale our dependent feature, that is charges. See, So scaling dependent independent, we scale हमने features क्यों करा था? The reason is because the features are having different units. Okay, for example, body mass index is having something. Okay, and its units are kg per meter square. For example, if it is a US data, then you can say, sir, pounds per inches square. This could be something. So when we are having the units of the features different, so it is mandatory for us to perform the scaling. The reason is we need to normalize our data so that all or everything should come under one plane. Next, if I'm going to do the analysis over that data, so I can get some predictive points. In case if you are having unscaled data, यानी कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, तो आपका prediction नहीं हो पाएगा proper. वो गलत है. okay, That is a okay. wrong step. So हम जो भी लाइक टारगेट के सिवा की जो सारी जो फील्ड है जिसे हम यूज करने वाले हैं मॉडल में, उसको स्केल करते हैं, लेकिन उसकी इफेक्ट हम हाँ टारगेट हाँ, पे टारगेट नहीं पे नहीं स्केल नहीं, करें हाँ हाँ तो हाँ. भी कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं, गलत सब गलत हो जाएगा. प्रिडिक्शन ही गलत आएगा. वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, चेतन. प्रिडिक्शन ही गलत आएगा आपका. यदि स्केलिंग नहीं करेंगे ना, तो प्रिडिक्शन गलत आएगा. करके कोशिश करिएगा, विदाउट स्केलिंग मॉडल को ट्रेन कर दो. ट्रेन में कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो होगा, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट अ रॉन्ग प्रिडिक्शन. वो पूरा प्रोजेक्ट ही गलत है फिर तो. ओके,
ओके, सो इसलिए बेसिकली यही है कि टारगेट कॉलम जो है उसको स्केल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये जो हाँ हाँ यूज हाँ, करने एक्स के एक्स, हाँ फीचर्स हाँ, एक्स, अपना एक्स जो है, उसको। what we are going to perform training, और जो करना है एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन, बिकॉज इफ यू गोइंग उसको टू स्केल डेटा को मैं अपने मॉडल के अंदर फिट करूंगा, ठीक है, उन्हीं से ही मैं पूरा मतलब अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा, एंड देन वी कैन ओके परफॉर्म द प्रेडिक्शंस। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, सो हियर्स माय इंश्योरेंस ऐप, दिस इज समथिंग व्हिच आई नीड टू बिल्ड। ओके, तो क्या करना है इंश्योरेंस ऐप के लिए, आपको यू नीड टू टेक द स्ट्रीमलिट। Okay, you need to take the Streamlit for it. Now it has been asked, sir, so please let us know about something about the Streamlit. Import Streamlit as ST. See, the reason is Streamlit, there is an official website. I already always told in every of a project when I'm going to do some deployments. So there is an official website of the Streamlit. Streamlit has been used to create the simple web application using Python codes, very simple codes of the Python. Okay, and you can create now, if you want to know about it, let me share it with you. Streamlit. Okay, let me show it with you. Okay, I'm sharing my screen for the Streamlit. See, there are other things also for the deployment of your model to create the web pages. For example, Flask. See, let me very frankly tell you, I am very much comfortable with the Streamlit because I'm good. I can have some codes comfortness. Okay, so I can use Streamlit a better way or approach for myself to do the code and create some website. So here you can see that there is already streamlit.io website available. Okay, streamlit.io, and you can check out all the kind of codes which has been required. For example, if you're going to draw, make a simple application, my first app, so streamlit as st, import pandas as pd, and st.write. Okay, and then you can read your mydata.csv, and you can draw some line charts related to it. So whatever the methods which are being used in the Streamlit, everything has been available in this website in a form of a tutorial. You can check out everything. Okay, there are many things you can do with the Streamlit, because here you are going to prepare a dashboard basically. So if you are being part of your data science and data and whatsoever, you are going to have a creation of a dashboards using your Power BI or Tableau, whatsoever you are going to use. But for me, I'm having the knowledge of the Python. Whatever you can let me know, sir, ये python से ये कर सकते हैं, तो I can do from that particular python. तो when you are going to draw some dashboard something like that, तो मैं python की ही help से, उसकी libraries की help से I can draw. मैं डैशबोर्ड आपको इसी से बना के बता दूंगा, पूरा सब कुछ इसी से हो सकता है. एंड देयर आर वेरियस अदर गुड लाइब्रेरीज इन पाइथन. जैसे डेटा विजुअलाइजेशंस की बात करें तो देयर इज लाइब्रेरी कॉल्ड एज प्लॉटली, तो वो भी आपको डैशबोर्ड काइंड लुक देता है. Okay, so you can use this Streamlit. So here there are many So, yeah. so this web version of it, does it have Python at the backend? Because we are running at a public हाँ हाँ server. हाँ हाँ, What is it? Python, yes, Python पर ही कोड होगा पूरा, everything. If you So see, we don't have to install libraries ये there करना है in करना है करना है Streamlit. करना है करना पड़ेगा अलग से. You need to install Streamlit. You need to install Streamlit. This is mandatory. First install Streamlit, then use it. Installing it on local machine or at हाँ, the लोकल server, लोकल because लोकल 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 पे चलेगा, बढ़िया. mm. हाँ, लोकल पे ही चलेगा. मैं आपको यहाँ जुपिटर नोटबुक तो लोकल मशीन पर ही मैं इंस्टॉल करके चलाऊंगा इसको, कोई इशू नहीं. उसके बाद हम ये इंटरनेट पे भी जो streamlit.io पे भी रन कर सकते हैं ना, हाँ देखिए, हाँ हाँ, कोई इशू नहीं वही है. करके दिखा, ठीक वो है, आप दिखा दीजिए. यहाँ यू कैन ट्राई. ओके, सो यू कैन पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलिट, आप ही कर सकते हैं. ओके, एंड देन यू कैन डू द कोड ऑन योर लोकल मशीन बाय यूजिंग स्ट्रीमलिट. ओके, सो देर आर वेरियस फंक्शंस अवेलेबल. जैसे ये स्लाइडर है, st.slider, तो ये आपकी वैल्यूज कितनी क्या है स्लाइड चेंज करने के लिए स्लाइडर है. ओके, जैसे आपको कोई चार्ट बनाना है तो ये रहा. आपको कोई इफ यू वांट टू गिव अ रेडियो बटन, तो जैसे एक वेब एप्लीकेशन के अंदर एक वेब पेज बनता है. ओके, तो ये स्ट्रीमलेट इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्रिएट अ वेब पेज basically. So its tutorial is very much important if you want to means learn this Streamlit. तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी वेबसाइट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट. ओके,
So you can pick up the calendar also, radio buttons also, pick up a color also, pick up a file also, everything simple, just one line, st dot file uploader, st dot slider, st dot radio. Okay, so everything you can do with this Streamlit. ओके, तो आपको इस तरीके का फील और लुक मिलेगा। तो फ्लास्क इज समथिंग, वहां पर पूरा HTML का यूज करके, और आपको यू नीड टू वेब पेज आपको क्रिएट करना रहता है। यहाँ पर हियर इफ यू आर नॉट गुड विद वेब डिजाइनिंग, यदि आपको वेबसाइट नहीं आता डिजाइन करना, सो यू कैन यूज द स्ट्रीमलेट पार्ट। ओके, इफ यू आर गुड विद द कोडिंग पार्ट, ओके, तो आप ये कर सकते हो, यू कैन डू एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू इट। ओके, तो यू कैन हैव कम्युनिटी गैलरी components. And what you do at the public one is can be made private also. What you Private are for showing here. We can have a private repository in streamlit.io, isn't it? नहीं, यहाँ मैंने कोई प्राइवेट रिपोजिटरी हैवंट क्रिएटेड ऑन एनीथिंग एनीवेयर, नथिंग, कुछ नहीं करा मैंने। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि पब्लिक वेब में हम वी कैन मेक एन ऐप देयर। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मेड अ प्रोजेक्ट ऑन इंश्योरेंस, हाउ डू वी सी इट इन अ पब्लिक यूआरएल? पब्लिक यूआरएल में आपको फिर डिप्लॉय करना पड़ेगा, आपको अल्टीमेटली यू नीड टू डिप्लॉय, यू नीड टू डिप्लॉय दिस ऐप। वो हमने Heroku से करा था। Heroku क्लाउड सर्विस वी डिड यूज्ड फॉर द पब्लिक डिप्लॉयमेंट। अभी तो लोकल होस्ट पे चलेगा। ओके, एंड देन वी नीड टू यूज Heroku क्लाउड सर्विस फॉर पब्लिक डिप्लॉयमेंट। And Heroku is free or it's a paid गड़बड़ है service? इस बार, अब हो गया है, Heroku फ्री नहीं बचा टिल नाउ। वी डिड अ प्रोजेक्ट, तो हालांकि मैं आपको स्टेप जरूर बता दूंगा यहाँ पर, व्हाट द स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द डिप्लॉयमेंट, बट आई डिड चेक्ड, मैं इस पर आई वाज वर्किंग। ओके, सो अब Heroku पहले फ्री वाज दे रहा था अपने खुद का डोमेन पर, on its own domain .heroku.com पर। अब Heroku is taking the card details. So you know how much card details? How much? No, नहीं, वो मैंने फिर जब when I did ask for the card details, तो फिर मैंने उसको I haven't put any information there. Okay, because previously जो भी deployment we did, that is based upon very simple, उसमें कुछ नहीं था, कोई charges नहीं था। अब right now it's taking the details. Sir, using Streamlit, I have to write a CSS JavaScript code, या it's automatically? ऑटोमेटिक है, या तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ मेथड्स अवेलेबल है Streamlit के अंदर। ओके, नथिंग, नो जावास्क्रिप्ट एंड नथिंग, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। नो नीड टू डू ऑल सच टास्क। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी यू कैन चेक आउट द फंक्शंस, कुछ फंक्शंस का आई एम गोइंग टू यूज इट हियर इन माय कोड। ओके, सो ये करना पड़ेगा आपको, पिप इंस्टॉल Streamlit, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। Okay, and then after installation on your local machine, you can use the Streamlit part. All right, so let me get back. Yeah, let me get back to the code. Okay, so now here's the tab. Okay, so I'm going to take Streamlit as ST. Okay, and then the next thing is which I'm going to take. Let me run this code. Okay. All right, then the next thing, I'm going to take pickle also. Okay, pickle as pkl, because the reason is I need to import my that particular your machine learning model which you have saved on your local machine. I need to upload it. Okay, so import pickle as pkl. This is what also I need to do. These two libraries are being important. Then the next thing is which I need to do is I need to load my model. Okay, so let me load my model. Okay, so this is how I will be going to do. Model equal to pkl.load open. The name of my model was, which I did saved in my local machine, is with the name insurance.p. Okay, this is the name of the model which I have saved in my local machine in my Python folder. So that is why when I downloaded the particular model, I copied it and pasted it into my my Python folder. Okay, I'm accessing my Jupyter notebook from my Python folder itself. So that is why this is the path. Path is very much important, which you need to give correctly. Let's see what happens. Okay, it gave me a warning, some warning thing. Let me ignore this. This is stuff. Okay, I've loaded my insurance model. Okay, now what you need to do? You need to input the data. Okay, you need to input
the data, and that data should be the number of features which your model is going to take as an input. This is what you need to do. So the first thing is, let me give some heading also. Let me give some title to my app. So that will be like this. Okay, st.title medical insurance cost prediction. Okay, medical insurance cost prediction. See, don't go with this warnings, because the reason is this will be going to run on the Streamlit. Okay, so when you are going to run on this on a local machine like this, so ye warnings deta rahega, so just don't consider them. Okay, इसके बाद what I need to do next, क्योंकि I've already prepared some stuff, but let's see what happens. Okay, so okay, here it is. Okay, so let me go to this part. Fine. Now, age you need to give. So again, going back to my initial code, what are the minimum parameters I required to create this task? When I go to my code, when I go to my initial code, and it has been clear that the number of columns which are available are age, gender, BMI, children. Okay, so age should be in it's a numerical format. Its minimum value should be 1, maximum should be 100. Okay, so you can take a range of values in the age. In case of gender, I'm going to take, okay, in gender I'm going to take either 0 or 1. This has been used by my what model. So I guess it should also be like a number. So let us have a change in the code. Okay, it should be like this thing, and again we can use this values, minimum value. Okay, just going to take this values. Okay, minimum value 0, maximum value 1. Okay, this is what this value 25 has not been required now here. So either you can give 0, or either you can give value 1 for the gender. Next column was my it was, let me check, BMI. Okay, BMI is also been a numerical value. Okay, so here you can again take, okay, minimum value 10, maximum value 50. Okay, value is equal to 10. Done. It's been correct. Children was again a numerical value. Okay, so just take the same thing, copy, and just take it here, st dot number underscore input. Okay, st number dot input children, and going to have like the values, minimum, maximum, whatsoever, the copy, and just paste it here. So minimum was 0, and the maximum value for the children as per my data set was 5, I guess. 5, ओके, हाँ 5, 6 वैल्यूज है ना, ठीक है 5, ठीक है, बस ये भी हुआ, तो आपने चिल्ड्रन भी दे दिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास था स्मोकर. स्मोकर में भी 0 1 देना है आपको. ओके, 2 वैल्यूज न्यूमेरिक्स, तो मैं इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ. ओके, इसी को ही कॉपी करके आई एम गोइंग टू गिव इट हियर कि क्या करना है, स्मोकर. ओके, स्मोकर, SMOKER, स्मोकर करा, st डॉट नंबर इनपुट, यहाँ पर आई डिड राइट स्मोकर लिखा यहाँ पे, और मिनिमम वैल्यू वेदर इट इज स्मोक तो 0, और नॉन स्मोक या वॉट एवर. ओके, जो वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिसाइड, फॉर 0 नॉन स्मोक, और फॉर 1 स्मोक. ठीक है, ये भी कर दिया हमने. इसके भी न्यूमेरिकल वैल्यू. योर मॉडल हैज बीन ट्रेन्ड ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू. ये गड़बड़ नहीं करेंगे हम कि आप इसमें कोई यस नो ऐसी कुछ कैटेगरी वैल्यू दे दो. ध्यान दीजिएगा, आपने यू हैव डाउनलोडेड योर मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू विच यू हैव इनपुटेड इन द मॉडल. तो जैसी भी मॉडल में आपने वैल्यू इनपुट करी है, उसी के हिसाब से यू नीड टू गिव द वैल्यूज हियर. ये करना है आपको. उसके बाद स्मोकर के बाद नेक्स्ट थिंग वाज योर चार्जेस. ओके, चार्जेस तो मेरा इशू नहीं है, चार्जेस तो मुझे प्रेडिक्ट करना है. नेक्स्ट वाज रीजन नॉर्थ ईस्ट, रीजन नॉर्थ वेस्ट, ये सारी चीजें लेना है. ओके, तो लेट मी जस्ट टेक इट अगेन. इनको हटा रहा हूँ मैं, ये आई जस्ट डोंट वांट टू कंसिडर दिस पार्ट. ओके, रीजन अगेन st नंबर इनपुट, सेम थिंग, यहाँ पर भी वही लेना पड़ेगा मुझे. ओके, कॉपी एंड जस्ट रिमूव दिस पार्ट एंड जस्ट टेक रीजन में मेरा पहला रीजन एज पर द डेटा सेट अवेलेबल टू मी, द रीजन वाज
northeast, region underscore northeast. This is what I'm available with. NORTHEST. Okay, region underscore NORTHEAST, region underscore northeast. Okay, and this is what I need to take here, copy and paste it here. ओके, एंड देन मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, यही था 0 1 में आ रहा है क्योंकि यू हैव डन क्रिएटेड डमी वेरिएबल्स बनाए थे रीजन के, तो 4 वेरिएबल्स बने थे। ओके, तो 0 और 1 ही वैल्यू है उनकी। नाउ इफ यू टेक नॉर्थ ईस्ट के बाद था आपका द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू चेक माय कोड, दैट इज रीजन नॉर्थ वेस्ट। ओके, रीजन नॉर्थ वेस्ट, सो नॉर्थ WST वेस्ट। ओके, so this is north west. Okay, just again same thing, minimum maximum value same. Okay, copy and again paste it here, and one more value again paste it here. Next was your region southeast and southwest, दो चीजें बचे हैं। region south east, region SOUTS south east, EST southeast, and the next is southwest. Okay, again, so region southeast, south EST southeast, and next one is the southwest. ये सारी वैल्यूज मैं अभी यूजर से लूंगा। ओके, आई एम गोइंग टू टेक ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। तो बेसिकली प्रिडिक्शन में करते क्या है हम, व्हेन हम वी आर गोइंग टू टेक ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, ठीक है, एंड फिर हम वी आर गोइंग टू, फिर मैंने क्या बोला कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर प्रिडिक्ट बटन, एक बटन बना रहा हूं मैं प्रिडिक्ट के नाम से। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, और प्रिडिक्ट बटन के अंदर क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट बटन के अंदर ये आपने जो मॉडल ट्रेन करा है ना, ये मॉडल ये वाला मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और ये जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे उन सबको मैं दूंगा। ओके, यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट जाएंगे वो, तो एज, ये जेंडर, फिर BMI, देन चिल्ड्रन, देन स्मोकर, देन रीजन, ये सारा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी आई एम गोइंग टू टेक इट हियर, नॉर्थ ईस्ट कॉमा, फिर क्या होगा नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट होगा, एंड देन द नेक्स्ट इज रीजन साउथ ईस्ट है, again region south SOUTH southeast है, and the next one is region southwest है, SOUTH southwest. whatever the argument which you are going to do, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, st dot number input, that means I am going to take a numerical input। तो st आपका streamlit है, streamlit is going to give you एक नंबर इनपुट के लिए आपको ऑप्शन देगा, ठीक है, आपको वो नंबर इनपुट करना है, वेब पेज की तरह दिखने वाला है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, और फिर यहाँ पर मुझे रिजल्ट्स आई नीड टू शो। तो ये मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, अच्छा ये जनरल, दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ कोड ओनली, दिस इज नॉट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ कोड ओनली, जो आप ऑलरेडी अपने ट्रेडिशनल मशीन जो एल्गोरिथम अप्लाई करते हो वहां भी यही लिखते हो, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, यहाँ भी यही लिख रहे हैं, बस इनपुट के लिए, फॉर इफ यू वांट टू गेट एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड, सो दिस इज समथिंग streamlit applications you are using, streamlit methods you are using to give the input. Okay, so let me run this part also. Okay, done. Now the thing is, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अब we need to now ये हो गया ना, आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा मुझे, आई नीड टू डाउनलोड इट, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करूंगा .py से, आई नीड टू डाउनलोड इट इन द फॉर्म ऑफ अ पाइथन फाइल। ओके, सो डाउनलोड एज पाइथन फाइल, ओके .py। तो दिस हैज बीन, मैंने इसको डाउनलोड करा इन अ फॉर्म ऑफ पाइथन फाइल। ओके, .py, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट .ipynb एक्सटेंशन, ये जो फाइल अभी बनी है ये .ipynb एक्सटेंशन से बनी, ipynb एक्सटेंशन से, लेकिन मैं .py फाइल, पाइथन फाइल क्रिएट करा मैंने, और वो अभी डाउनलोड में गया है, मैं उसको कर रहा हूँ कॉपी, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इट्स नॉट बीन विजिबल टू यू, बट नो वरीज, आई एम टेलिंग द स्टेप्स, आई एम गोइंग टू कॉपी इट, डाउनलोड से उठा के मैं उसको उसी फोल्डर में लेकर जाऊंगा जहां से मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है, इट इज इन माय पाइथन फोल्डर, मैं वहां पर लेकर गया, इसको सेव कर दिया वहां उठा के। ओके, नाउ अब क्या करना है,
आई एम गोइंग टू ओपन माय विंडोज पावरशेल, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट से तो जुपिटर नोटबुक रन कर रहा है इनिशियली फ्रॉम माय कमांड प्रॉम्प्ट जुपिटर नोटबुक इज इट रनिंग। तो मैं अब विंडोज पावरशेल ओपन करूंगा, तो विंडोज पावरशेल आई डिड ओपन एंड आई एम राइटिंग हियर। मैं उसको पहले उस पाथ पर ले, एक मिनट रुको, मैं आपको शो कर रहा हूँ, लेट मी शो यू दिस थिंग। Let me show my Windows PowerShell. Because my Jupyter notebook is currently running by command prompt. Okay, so I need to use something else to run my file. So पहले मैं जा रहा हूँ cd python. So I was talking about this folder जहाँ पर मैं अपनी सारी फाइलों को स्टोर करता हूँ in Python folder present in C drive. Now what I need to write Streamlit run. ऐप का नाम क्या है मेरा? My app name is जो कि मैंने डाउनलोड करा है, that is your insurance dash app dot py. Insurance dash app dot py, ये मेरी फाइल का नाम था। ओके एंड देन आई एम प्रेसिंग एंटर, प्रेस एंटर। इंश्योरेंस अब देखिए आपके सामने, मैं अभी आपको शो भी करूंगा ऐप। ओके आई एम गोइंग टू शो यू द ऐप। तो अब क्या है, लोकल होस्ट पे ये ऐप चलना शुरू हो गई है। ओके लेट मी शो यू हाउ हाउ द ऐप हैज बीन विजिबल। टैब, ओके इंश्योरेंस ऐप ऑन स्ट्रीमलेट। यू कैन सी दैट दिस ऐप इज बिन विजिबल टू यू। जो मैंने कोड करा था वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब ये सारी वैल्यूज में एंटर करूंगा एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द प्रेडिक्ट बटन, ये चार्जेस बताएगा। नेक्स्ट। ओके सो इनिशियली मैंने एक वैल्यू इक्वल टू 25 ली थी, एज पर कोई मैंडेटरी नहीं है। आप बताइए आपको व्हाट एज यू नीड टू पुट हियर, प्लीज हेल्प मी, व्हाट एज आई वांट टू गिव हियर, एनी एज फ्रॉम योर साइड, एनीवन प्लीज, इज दैट ओके? 45, शैल आई टेक 45? ठीक है 45। ओके जेंडर इज आइदर मेल फीमेल, तो 0 1 से ये क्लियर हो रहा है, अदर इट्स अ मेल, 0 एंड 1 इज अ फीमेल, so let it be a male right now. Body mass index, okay body mass index, let me take somehow what there are various values for the BMI, so let me take 23. Okay 23 is a BMI value. Okay so I did take this 23 value, or ठीक है fine है। Now children's, for example there are no children's available. Okay no children is there. A person is non-smoker also, 0 0. Okay non-smoker also. North east region no, south north west region no, south west region no, south west को 1 बना देते हैं। Okay the person is from south west, तो एक region से है, बाकी इन तीनों को हमने 0 ही रखा। Okay let me have a prediction. Okay there is some error related to it I guess. Grand was saying no attribute underscore loss. Okay there is some issue related to it. We have simply perform this ये तो ठीक था इतना, दिस रन ऑल्सो। यदि हम PyCaret से लेते तो ये मुझसे अब अभी नहीं क्योंकि PyCaret इंस्टॉल नहीं था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिड। नाउ कुछ इशू दे रहा है, एन इशू इज रिलेटेड टू योर समथिंग, some type changes. Is it related to some type changes? No attribute loss, it's been showing, that means मुझे file I need to go back to the file to perform to have a check। file पर वापस आते हैं। okay object has no attribute underscore loss, that is an attribute error। okay I think हमने सारे attributes have we done taken it correctly। okay ये यहाँ पर है north east comma and predict rival, predict init। okay let us get back again to the code whether we did some mistake or what। okay so let me get back to the code again, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है। okay so here is your code। यहाँ तो when I was running there was not at all an issue here। okay अब एक काम और करते हैं, चले ठीक है ना, do one thing।
यदि हम अपना when we are going to use this model on our initial file also, initial file पर चलते हैं, वहां से just थोड़ा सा चेकआउट करें. Let us go to your initial file, what we have created for the insurance. Okay, well, from where we have trained our model. Okay, this is your insurance file which we have created. Okay, ये रहा. अब यहाँ से पहले let us have some prediction from our side. कुछ predictions अपन अपने side से ही करते हैं. Just take the value. Your model is RG नहीं ना? REG dot predict. Let me take some values here. Okay. इसमें कुछ values लेते हैं. Then we are going to check the predictions from our side कि क्या क्या हो सकता है. Okay. So I'm going to take the first thing is your age. So age you can take, for example, 20. Okay, for example, 45 comma, next one is your gender, so make it as 0. Okay, for example. Okay, then the next one is BMI, so do take it as like 24. Okay, the next one is the children, do take is as 1. The next one is the smoker, do take is 0. Then charges, okay, charges की जरूरत नहीं है. Region northeast 0 comma, region northwest 0 comma, southeast take it as 1 and southwest take it as 0. ऐसा करा मैंने. Okay, let me कि मुझे क्या prediction दे रहा है. Okay, it's going to give you the correct prediction. से बोल रहा है 16,725. So your model is working fine. Your model is working fine. It's giving you the predictions here. And same model I have downloaded and same model I have uploaded on my Streamlit. यही करा है मैंने, अलग कुछ नहीं करा था. और this is how you can form the prediction. तो ये prediction आप Streamlit के अलावा आप अपने उस पर भी मतलब कर सकते हैं, कोड पर यहाँ पे predictions निकाल सकते थे. ठीक है, just putting in the values and performing the predictions. तो यही task मैं वहां पर कर रहा हूँ. With the help of Streamlit I am going to take these values as an input. यही कर रहा था मैं. और predict method I did applied. Okay, I did apply the predict method on the model. यही करा मैंने और कुछ नहीं करा. Okay, let me show you the code again. मैं आपको बता रहा हूँ क्या करा था मैंने. This is what only I did. Insurance app पर जा रहे हैं. Okay, so this is what only I did. Okay, so ये this was my file. Okay, और नहीं तो just do one thing. Let me. Okay, anything you want to say from your side or whatever, anything you want to have a any doubt or any suggestion or whatsoever, if you want to give, you can. Anything you want to say. Scroll below to the code. Scroll below to the code. This code only? The input code, yeah. Okay, input. Okay. I don't require these values. Initially, I don't want to give any value. Yeah. All the numerical inputs I have taken, nothing else. And just use predict button and model.predict. See, model is something which I have uploaded here. Okay, that's it. Okay, and this is the same model I'm used for the prediction. I did perform prediction over the main file. I did perform the prediction. आपको दिखा भी दिया मैंने. Predict करके दे दिया उसने. Results. It gave me the results. Okay, and same parameters I'm going to take it here. तो यहाँ कहीं northeast, north northeast and northwest. Okay, I think all the spellings सब ठीक है. Region north west region south est and region south west. Okay, all the spellings are means correct. Okay, there is no error in the spellings also. Okay, and we are having a predict button and we are going to predict on the basis of the model. This is what we are going to do and going to show the results. Sir, can you run this model.predict just by giving the value rather than the variable name and just test it? It is showing. Which one? Where? Here only? Importing. Yeah, after importing the model from pickle file.
Okay, here. Can you run that? You run Okay, Kaggle like yes. After that, model dot predict and just give the value 0 1 like that, and just can check it. to predict. Okay, and the values which I gave there, let me copy paste. And these were the values. Not been. Okay, just okay. Here are the values. Okay, and let me run this code. It's giving an error here. Object has no attribute underscore loss. There it was not been giving, but here it has been giving. That is why this is the same error which was coming at the app also. No attribute underscore loss. Where we have taken any attribute underscore loss in our Kaggle file. Okay, so what could be the thing happened. Just hold on a second. Okay, shall we do one thing? I have an idea. Okay, so I have an idea. What I do is, let me create this code on my Jupyter notebook itself, because the initially I did taken the PyCaret, but later on I haven't taken the PyCaret. Okay, so let me upload this file on my this Jupyter notebook. Okay, and then we can better we can use this code. Okay, so let me delete all the steps which has been taken to perform the PyCaret thing. Okay, I don't want to use the PyCaret. Okay, so going to take, okay, import pandas as PD. I'm going to show you. Okay, I'm just showing you this thing. A tab, insurance Jupyter notebook. Okay, import pandas as PD. Okay, I'm going to run this thing, and next I'm going to take df equal to pd dot read underscore csv and insurance dot csv file. This is what I need to take, and remaining df head, df tail, and all the things which has been required. So let me rerun my complete code. Kernel, restart and run all. Where I have taken, remove this part. Okay, kernel, restart and run all. Okay, so let's see. Okay, so this is your sample code without using the PyCaret. So I downloaded okay, so this is how data profiling works on your Jupyter notebook. So I downloaded the complete IPYNB file from the Kaggle, and I uploaded that file on the Jupyter notebook, and I deleted all the code which was been related to the PyCaret. Okay, this is the overview. Okay, matplotlib, this is the count, this is the plots which I created there on the Kaggle. Okay, everything is all same. Okay, this is your file, this is how you did, this is your final. Okay, gradient boosting, dump, okay, you have created a dump model. Okay, and fine, everything is perfect now. So this is your insurance underscore charges p. This is a dump file has been created in my folder Python. Okay, no, insurance underscore charges. Yeah, I got this thing, and I'm going to use this Python file in my, where, in my Streamlit now. Okay, I'm going to use this thing in my Streamlit. Copy, and where is my insurance app?
Just take it here, and now I'm showing you the screen. Fine. Let me reshare you the screen. A tab and insurance app. Okay. Now let us run the code again. First Streamlit I run, pickle I run. Okay. Then I'm going to load my model. Okay. This thing I've loaded. Okay. And this thing to perform the prediction. Sir, it works. Because when you have downloaded the file from the Kaggle ना, means if you are downloaded the model from the Kaggle, तो अपने साथ कुछ लेकर आया वो. अब ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता वो Kaggle से डाउनलोड वाला क्या लेकर आया साथ में. No, तो I think. अंडरस्कोर लॉस समथिंग वो कुछ लेकर आया. Sorry to interrupt. I think it was about the SkyKit version. हाँ हाँ In Kaggle, I think it was completely updated, and in the local system, we might हाँ be using previous version of sklearn. हाँ हाँ. So there Might be. was difference in the sklearn version. I was just checking it on the Stack Exchange, and that is the possible answer that I got for the exact error that we were getting. या so what I told कि वो अपने साथ कुछ when you downloaded the model, तो वो अपने साथ जो भी उसके configuration था वो लेकर आया था. और and when we are using the particular configuration on our local machine, तो वो match नहीं हुआ. Okay, so because वो match नहीं हुआ तो उसने error दे दिया. अब यहाँ पर Can you show the browser, because we are not able to see, because सर screen is empty. सर मैंने अभी चेक, मैं तो यही दिखा रहा हूँ आपको जो आई थिंक जो है अभी. Okay, No, when you run a Streamlit, हाँ we हाँ want to see that. हाँ. You are sharing presently the Jupyter. We want to see the Streamlit app which is working. अच्छा, वो अभी अभी नहीं से अब क्या करना पड़ेगा मैं बता रहा हूँ. लेट्स सी. अभी Okay. ये हुआ, अभी मुझे इस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज मॉडिफाइड. ओके, तो लेट मी कट दिस पार्ट. ओके, आई नीड टू डाउनलोड दिस फाइल. पहले अब ये टाइटल, देन ऑल दीज थिंग्स. Okay, now I'm going to re-download this file, and then I'm again going to run this file. Okay, so go into the file and now download this file. Okay, with the Python. And Okay. if you also notice, all those warnings that we were getting is not there right now when we did it हाँ in the local हाँ server. लोकल सर्वर पे, तो अभी हमें वार्निंग्स नहीं. सो प्लेटफॉर्म देयर इज अ इश्यूज व्हेन यू आर वर्किंग विद द केगल. तो केगल इज समथिंग व्हिच इट सपोर्ट्स. नाउ इफ यू आर वर्किंग विद द जुपिटर, तो यदि हम इफ वी डू द कंप्लीट कोड ऑन द जुपिटर, तो वो वार्निंग्स वाज नॉट कमिंग, बट आई डू took a code from तो वो warning is been going to show anyways. So I downloaded this app. Okay, and let me put a name to it. Insurance underscore new. Okay, just put a name, insurance underscore new. Still it is in downloads. I'm going to take it to my Python folder. Okay, so I'm going to copy it and take it to my Python folder. Okay, here it is in my Python folder, insurance underscore new Python file. Okay, and now as the question asks, sir, kindly run this stuff. Okay, so I'm running it. So let me show you my your Windows PowerShell. Okay, now I'm going to share you my Windows PowerShell. So I have saved this particular file in my Python folder. I'm going to share you the Windows PowerShell. I hope it is visible. Windows PowerShell. So cd dot dot cd dot dot, then cd python, then streamlit run, streamlit run insurance. The name of my file was now insurance underscore new. I guess I put a name, insurance underscore new. Okay, so insurance underscore new dot py. Okay, let me run this thing. Is it double N in the Python? Yeah, actually that is my है ना, आपको नहीं. Okay, हाँ, okay. that is है ना, वो मेरा मशीन Yes. का है. ठीक है, मतलब मैंने I did created this name, तो आप अपना कुछ भी रख सकते हैं. Okay, it's the directory हाँ name. हाँ हाँ, डायरेक्टरी नेम है बस वो. Okay. Okay, so now वो खुल गई है ऐप. Let me share you the app.
Okay, so here is my medical insurance app. You can do the changes. ये मैंने dash you. It depends upon you. Whatever the skills you are available with the Python scripting related to the Streamlit, you can change any kind of visualization here. So medical insurance cost app. So age is something. Let me put it as 45. Gender, okay, 0 for male. Okay, body mass index, let me take 24. Okay, children 0. Okay, smoker 0. Northeast 0. Northwest 0. No, south, you can southwest 1. Okay, this is what I'm going to take. Perform the prediction. The output is 16,048. This is how you need to pay. Done. You got the perfect answer. So this is a application, okay, which you have deployed on your local host, local machine for your your project insurance cost prediction on the given data. Okay, sir. I have a question, sir. Yeah. This is all like when we are putting northeast separately and northwest separately because it was encoded one hot encoded, right? 100 coded, But yes. if we think of a normal consumer who can use this app, they will not know that for gender they'll have to give 0 for male, 1 for female. Yeah. So See, we can we need to just right away we need take to it as male customize. and Yeah, female? we can customize our coding part. Okay. Okay. So yeah, so for that, it was written here na age. So in your, you can have a customized age under this much group you need to do. Okay, gender in a bracket in your coding skills itself. You can put, okay, you can write in a form na male equal to 0 comma female Okay. equal to 1. Yeah, in your coding also you can mention. Now, what I was thinking is, we'll simply take as it is the male and female, the original things that we had, and in the back end we'll convert and then we'll put it into the model, and it will straight away take it here for the prediction. We can do that, right? If you want to take male female from your side, and then in the backend you see, in the backend your model require these values, see, to be very much clear. Okay. Yeah. So whatever you are taking in front end, okay, if you are having any kind of skills, you have any options available, you can take anything from the front. Okay, front end. Okay, any. But when you are going to perform model dot predict, filter those values in this order only. Okay, understood. Yeah, that was my question. But can we predict in bulk? It means like 10 records. If you give the Excel file, can we upload and predict? We can predict for. No. What if I want to predict for 20 people at the same time? Means like, can I upload an Excel file and? Sir, you can predict. You can perform prediction for anything. Anything you can perform the prediction. The approach will be same. No, sir. You are entering the one by one, right? You are entering the one record at a time and predicting. Predict better. Yes, Monica, please go on. So what should is there any option to upload an Excel file? Yes. Bilkul, you can do that. You can upload an Excel file. You can upload a data frame. ठीक है, यहाँ पर मैंने model dot predict में वैल्यू लिया था. ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, you can have a data frame. ठीक है, और you can upload a data frame for the prediction. ये भी कर सकते हैं आप. और आप ये देखिए, this prediction method has been working as same as we did in our main project. वहाँ हमने सिर्फ क्या करा था, predict लेकर x test करा. तो y prediction we are going to get. सिर्फ x टेस्ट करा, y predictions we are going to get, ये मिल गया था. तो यहाँ आप यदि बोल रहे हैं कि सर एक वैल्यू, तो आप एक डेटा फ्रेम, यू कैन टेक डेटा फ्रेम विद ऑल दीज वैल्यूज, ऑल दीज सेट ऑफ वैल्यूज, यू कैन अपलोड. आप कर सकते हैं और प्रेडिक्शन कर सकते हैं. यस, पॉसिबल, यू कैन डू दैट. होगा. यस, इट इज पॉसिबल. So for that we'll have to put an option in Streamlit to accept uploading a file, right? वहाँ आपको pandas लेना पड़ेगा. ठीक है, when you are going to give the data frame, तो you need to give the pandas. वहाँ pandas चलेगा, वहाँ pandas लेना पड़ेगा और फिर आपको as an data enter करना पड़ेगा. Okay. No, what I understood from Manikya is that, for example, if there is a consumer who has all of these details in an Excel file, they should be able to upload it in the front end, and in the back end we'll have to take it to data frame and then pass in. I'm just asking, in Streamlit, is there an option to upload the file? हाँ, तो we are going to take ना, let me show you कि आप कोड क्या करने वाले हैं for that particular purpose. What kind of code you are going to do. Let me stop the record.